आपको नहीं पता फाउंडर कौन है, आपको नहीं पता मेरी स्टोरी क्या है, और कहानी सबसे बड़ी चीज़ होती है आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग में. अच्छा, हाउ डू यू टेल योर स्टोरी? इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें establish करना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल इन मूवीज़ वी हैव अ कैरेक्टर एंड देन देयर इज़ अ वांट एंड देन देयर इज़ एन ऑब्स्टिकल. तो ऐसा कोई फॉर्मेटिंग ज़रूरी है किसी स्टोरी का कोई नैरेटिव बनाने के लिए? फॉर्मेट सबका एक ही होता है, दैट यू स्टार्ट विद द एंड. आप एक फैंसी पर्पस, आप एक अच्छी बड़ी एजेंसी हायर करें, वो आपको एक बहुत वेल आर्टिकुलेटेड पर्पस लिख के दे दे, जो अपनी वेबसाइट पे डाल दें, अपने ऑफिस में 1000 जगह लिख दें, मतलब वॉशरूम तक कोई जा रहा है तो पहले पर्पस पढ़ रहा है. इससे पर्पस डिफाइन नहीं होता. मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ, जैसे मैं देखता हूँ अभी फेडेक्स है, its purpose is reliability, Apple is innovation, Volvo is safety, if I talk about Rolex that's sophistication. तो मैं एक पर्पस ऐसे ही ले लेता हूँ कि it has to be about comfortable or comfort or something, and then I start weaving a story around it. स्टोरी जितनी स्पेसिफिक हो उतनी इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेबिलिटी होती है. As somebody with such a vast experience, how do you be on the pulse of it and you say no, this is wrong, this is right? To catch attention you need something which can have a larger appeal. That larger appeal could be about inner confidence. Okay. And that is why when we started putting together the brand positioning, we said whistle is an expression. See, when do you whistle? आपने किसी लड़की को छेड़ना है तो आप सीटी मारेंगे, है तो बड़ा डीप रूटेड इनर एक्सप्रेशन. बट नॉर्मली आप ज्यादा लोग तब विसल करते हैं जब बड़े खुश होते हैं अंदर से. You've got about 25 years of experience driving growth, healthcare, consumer brands, digital technology. Most recently as the CMO of Clove Dental. The next 5 minutes, you will have to be giving one core message to a marketer who's struggling with growth today. Bang on. Renuka, you've over 24 years of experience across healthcare, consumer brands, and digital technology driving growth. More than anything inside marketing, you've been attracted to brand-led growth. Correct. So, what is it about brand that you chose it more than anything else? That is quite simple, and it started from first understanding brand hota kya hai. And when you say what is brand, any normal marketer would say, you know, the look and feel, how people see you, your logo, your font size, your color scheme, etc. That's not what brand is. Brand एक emotional connection है. How do people perceive you? How do people bond and connect with you? And people are the audiences. Those ones who are, you know, whose lives you are touching by the product, services, whatever your organization, your offering is, that is what real brand is. उन connections से अपने business को कैसे grow करना है, this was super exciting. In the past 24 years, I think I've learned it at different places, in different ways. And so for me, brand-led growth is something that I've experienced is the true success. Okay. And जो customers' loyalty, जो customers' commitment, and almost ownership that this is the brand I own. You know, when they adapt your brand, they own it. And then they become your brand ambassadors and they spread the word. So that's very exciting for me. So brand की जब हम बातें करते हैं, then I think we see some celebrity being hired as an ambassador, and then people, for example, when I see Indigo, they have everything in blue, a particular font style. So what is it exactly? Is it how we make it look and feel in the market, who we hire, or is it something else? It's a combination of multiple things, if I may. Okay. इंडिगो का आपने एग्जाम्पल लिया, वो ब्लू कलर, वो लोगो का स्टाइल, यस वो रिकॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो ज़रूरी भी है दैट आप कंसिस्टेंसी रखें. लेकिन
अगर सिर्फ वो कर लेने से इंडिगो इंडिगो नहीं बन जाएगा, राइट? आपको अपने ब्रांड की जो एक ट्रू एसेंस है वो उसकी पर्सनैलिटी से आती है. पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं है कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया है अपने आप को, शूज़, बेल्ट, टाई, पॉकेट स्क्वायर, फिट, ये अकेली चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है. इसके पीछे आपके ब्रांड का विजन क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी level of commitment to your customers क्या है. If you are honest in your communication and you come true to it, no matter what happens, you come true to it. If and I'll give you a real life example, yes, that helps. ताकि थोड़ा सबको समझने में आसानी हो. Back in Max India Group, we were launching Antara, one of the first premium लाइफस्टाइल ओरिएंटेड रिटायरमेंट कम्युनिटी. इससे पहले इंडिया में जो भी था सब रिटायरमेंट के नाम पे ओल्ड एज होम या ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ था. इस लेवल पे जबकि लोग रिटायरमेंट पे थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं और कट डाउन करने लगते हैं लाइफ में अपनी लग्जरीज़ के ऊपर, क्योंकि इनहेरिटेंस दे के जाना है. ऐसे टाइम पे आप किसी को बोलें कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करिए, अब आप फ्यू करोड्स की एक रियल एस्टेट खरीद लीजिए, और जो पहली कम्युनिटी थी वो देहरादून में थी, तो आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली एनसीआर से आप देहरादून जाएं रहने के लिए. इट वाज क्वाइट अ बिग स्टेप. ऐसे में लोगों को कन्विंस करने के लिए हमें चाहिए था कि वो हमारे को ट्रस्ट करें. वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वी हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रू नीड्स वर. वन आर दोज नीड्स दैट आर वेरी वेल नोन कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा थोड़ा एक्सपोज्ड होते हैं. तो इसको करने में आपने क्या कुछ एक स्ट्रक्चर फॉलो किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? फॉर एग्जांपल, what I'm trying to understand here, and if I am a new marketer or a founder listening to you right now, I want to understand the structure of it. So, and I've read about it. What you've done with Antara is really revolutionary. You've taken a segment that is viewed as plagued by stigma, by perception of isolation, and something that's not by choice, something that's viewed as the last chapter, and you've turned it into a new beginning, right? So I'm dying to understand that if there's a structure that you followed as step 1, step 2, so how did you go about it? See, the first stage was to go gung-ho about, and I'm just sharing the real experience, okay? Yeah, sure. We were very excited that there's nothing like this that exists. We are going to be the first movers. Okay. We will have the advantage on our side. And we've created a fabulous product. We did a lot of research. We complied to the American Disability Act. Okay. So we put our best product forward and we launched with it. And yes, there were some early adapters. And we said, okay, great. Ab yahan se to kahani. And we only have 200 apartments in the first community. So there's only 200 people we need. ये तो फट से हो जाएगा. But that's where the real challenge came. When we started to get rejection, when we started to get, we are not sure, let me think about it. And then that thinking is not ending and it's going on. And there are other stakeholders. Biggest stakeholders, the children. You know, the stigma, as you mentioned, एक यही स्टिग्मा नहीं है कि स्टिग्मा ये भी है कि इस उम्र में हम अपने माँ बाप को रिटायरमेंट कम्युनिटी भेज दें, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा. वो भी एक स्टिग्मा है. So were you able to disclose all of this during your research, or? Yes, we spent a lot of time first talking to the first set of people who were early adapters, who bought, what were their RTBs, the reasons to buy. You were saying that research was an ongoing process even after you've launched it initially. Yes. Okay. Yes. First research, like everybody does, where you go and you do your research. We traveled all over the world. You know, what is happening in retirement, senior living, you know, across the world. Came back home, Indianized it, backed it with our learnings, our feasibility study, where the business model will stand true. You know, how we'll be able to sell this proposition at what cost, etc. All those check, all great. But early in our business, we realized
we could see the signs that a lot of people, when they meet us, they are very excited. We are great people. We had great way of presenting our value proposition. We did everything right. No one could say no on our face. But they would say, we'll come back to you, we'll think about it. These reasons were not reasons enough. We didn't understand what was wrong at the time. We were nice people, so people were nice to me, nice to us, and they couldn't say no on our faces, but they wouldn't say yes. So we wanted to understand. So first was naturally, like any brand would do, see what are the reasons to buy and try and look for lookalikes and harp about those reasons. उन्हीं बातों को हम बढ़ा चढ़ा के बताएं, हम टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, देखिए इन्होंने ऐसा किया, आप भी ऐसा कर सकते हैं. Then we had a bit of a aha moment when we looked at our data. Now, data is king, right? It tells you everything. When you look at the data and you say, oh my God, look at the number of people who have said no. This is like 100 times more than the people who said yes. Okay. So, and we are focusing on those. Inka kya? Then we started talking to people who said no. So you did not learn more from the data that was positive, but more from the data that was negative. Oh, that learning was priceless. Okay. That is why they say look at your competitors' dustbin if you want to make a business out of that. Absolutely. Bang on. Yeah. We looked at our own dustbin. Okay. At the time, we thought, oh, this is not a good lead. We followed up for so long and they haven't responded. It's gone cold, right? And you throw it down. But we touched back on that, did very in-depth interviews with them, and we sat and we told them very honestly that we understand you don't have a decision yet, but we'd like to come and really talk and understand what is it that we haven't been able to offer you. What could we have done? So we started having these really nice long conversations. Normally, we would get invited to their houses. Okay. They would host us in their homes, offer us tea, coffee, and have a good long conversation, free flowing, no questionnaire. Really listen to them. And when we started listening to them, we understood, पहले हम लोग सोचते थे capex main reason है. Because it's a wholesome, handsome sum of money for someone to invest. और लोग इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते. लेकिन ये सब करने के बाद समझ में आया केपेक्स की टेंशन नहीं है. इट इज़ द ऑपरेशनल कॉस्ट. अच्छा. क्योंकि हमने जो डे टू डे ऑपरेशंस, द क्यूरेटेड लाइफ दैट वी हैड offered to our residents was too curated. Okay. They wanted a little flexibility. True. Yes. They needed to pick and choose on their own. So we unboxed it. Okay. You know, और फिर उसके बाद कहानी बदल गई. Okay. और हमें ये भी समझ में आया कि सारे सीनियर सिटीजन्स सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के साथ बैठ के नहीं एंजॉय करेंगे, तो थोड़ा इंटरजेनरेशनल फ्लेवर चाहिए. सो वी टुक दैट फीडबैक. पहले हम बोलते थे 16S is happiness. Now at 60, your mindset is different. At 55, your mindset is different. True. We reduced the age bar by 5 years, and that was a game changer. Okay. हम सिल्वर से सॉल्ट एंड पेपर हो गए. तो लुक एंड फील की हम बात कर रहे थे. लुक एंड फील भी मैटर करता है. अच्छा. आपका सॉल्ट एंड पेपर ये दिखा रहा है कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आपको ट्रस्ट भी किया जा सकता है क्योंकि आपने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, बट आपके अंदर एक यूथ भी है, आपके अंदर अभी भी बहुत ज़िंदगी बची है. इसके लिए मैं आपको आपकी लाइफ का, हैंस द न्यू बिगिनिंग, लाइफ का नया चैप्टर आपको प्रेजेंट कर सकती हूँ. इट मे एक्साइट यू. सो दीज वर इनसाइट्स दैट वी गैदर्ड बाय टॉकिंग टू पीपल जिन्होंने हमारे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट्स में हाँ नहीं किया. वी ग्रो ऑन देम. और यहाँ बात आती है ट्रस्ट की. हाउ डू यू ग्रो ऑन समवन? यू ग्रो ऑन समवन व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली ऑलवेज देयर एंड यू आर टॉकिंग द सेम स्टफ. यू डोंट चेंज. आपका रंग नहीं बदला, आपका लोगो नहीं बदला, आपके बात करने का स्टाइल नहीं बदला, लोग भी नहीं बदले. If today I send you one marketer, one brand ambassador, one salesperson, tomorrow I send somebody else, कितना रेपो बिल्डिंग खराब हो जाता है. सो वो कंसिस्टेंसी दिखाई देनी चाहिए. That is why they say culture eats strategy for lunch. Oh, lunch, sometimes even before lunch, midday meal. Okay, so here's what I understand. You've done your research. जी. ठीक है. उसके बाद you've been talking to the customer. जी. तो आप ग्राउंड्स पे रहे,
talking to not just your customers but customers who turned you down. Yes. Then you've got certain insights. Then how did you use those insights to make decision? Is there a science behind that decision making and the KPIs on which you've measured that customer data? यहाँ पे कुछ एक तो हमने while main science lied in understanding your customer's pulse, we had a bit of a we used to call it a family gathering, while it is a weekly business update meeting. Okay. It's one thing to measure business KPIs. You need to look at your funnel, you need to look at every level of the funnel and have discussions कि भाई किन KPIs पे किस लेवल पे हम मेजर करेंगे. लेकिन एक और चीज़ होती है जो पल्स होती है, आपके कस्टमर की पल्स, वो रियली आती है सेल्स टीम से. हमारे जैसे मार्केटर्स ये गलती करते हैं. मैंने भी शुरू में वक्त लगाया ये सीखने के लिए कि सेल्स और मार्केटिंग स्टेप brothers or sisters नहीं है. They are like not even first cousins. They are like real brothers and sisters. They have to go hand in hand. आपकी सेल्स टीम की जो इनसाइट्स हैं, बहुत ट्रूथफुली ऑनेस्टली अगर आप वीकली डेली बेसिस डिस्कस करेंगे तो आपको अपने कस्टमर की पल्स समझ में आएगी. आप उन्हीं में आपको सारा ट्रेंड मिल जाएगा. आपको बाहर से कोई मेजर बिग लाइफ चेंजिंग KPIs बनाने की ज़रूरत नहीं है. You just listen to your customer. You've got your KPIs there. They will tell you what type of customer will say yes, what type of customer will say no. But the ability to fine tune and have the agility to change, I think वो एक सक्सेस फैक्टर हो सकता है जो कई बारी हम लोग करते नहीं हैं. और स्पेशली आज के वर्ल्ड में अंतारा एक ऐसा, बिकॉज अभी हम अंतारा के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अंतारा एक ऐसा प्रोडक्ट था जो ज़्यादा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन पे ट्रस्ट बिल्ड करता था. अगर मैं बैठी हूँ और मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, ये सब कुछ मेरे लिए इंसाइट है. आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. टुडेज वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी डिजिटल. सब कुछ डिजिटली हो रहा है. आपको नहीं पता फाउंडर कौन है, आपको नहीं पता मेरी स्टोरी क्या है. और कहानी सबसे बड़ी चीज़ होती है आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग में. अच्छा, हाउ डू यू टेल योर स्टोरी? डज माई स्टोरी lends authenticity? Do you believe it? Do you then think that you could be a part of this story or you want to be a part of this story? I think ये वाले जो स्टोरी बिल्डिंग के KPIs हैं और ऑथेंटिसिटी है, ये भी बड़ी, आज हम उनको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं. जब हम अंतारा बना रहे थे और प्रमोट करना शुरू किया था, हम उन्हें इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलते थे. We didn't have very salesy words for them. Okay. They were just our residents telling their eye stories. ये मेरी कहानी है. तो स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस, बट स्टोरी टेलिंग वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें establish करना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल इन मूवीज़ वी हैव अ कैरेक्टर एंड देन देयर इज़ अ वांट एंड देन देयर इज़ एन ऑब्स्टिकल. तो ऐसा कोई फॉर्मेटिंग ज़रूरी है किसी स्टोरी का कोई नैरेटिव बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो नेचुरली वेदर इट इज़ पुटिंग योर ब्रांड फॉरवर्ड एज ए प्रोडक्ट और अ सर्विस और राइटिंग अ नॉवल और राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड अ स्टोरी ऑफ अ मूवी और अ प्ले, फॉर्मेट सबका एक ही होता है, दैट यू स्टार्ट विद द एंड. What is the end result you want? है ना? आपको अपनी स्टोरी कहाँ एंड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पिच कर रहे हैं, आपको अपनी स्टोरी ऐसी जगह पर ख़त्म करनी है कि वहाँ से आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट, जो भी आपकी ऑफरिंग है, वो कस्टमर को डिज़ायरेबल लगे. अगर आई मीन अल्टीमेटली इफ़ यू लुक एट, यू वांट टू क्रिएट अ डिमांड, राइट? हाउ विल यू क्रिएट अ डिमांड? बाय मेकिंग देम वांट. So you start with that in your mind, but in the middle, the ingredients that you put it, like a dish, while the garnish is that little flavor which will say, oh yes, I want to eat it, but the cooking has to be done in a certain aesthetics, in a certain clean hygienic way. The presentation has to be good. It's like
any of this. So the ingredients are, first of course, is your product. It has to be a good product. It has to be able to give the value for money that people are looking for, and then some. Okay. And that then some is something that you don't put ROIs on. Okay. You offer it with the truest of your intent and integrity, because that then some is what will bring them back to you. Okay. For example, and I love telling Antara stories, but it was really passionate project of mine. But you know, when we were selling Antara, तो हमने अपना, like any real estate based solution, आप ब्रोशर बनाते हैं. True. तो हमने ब्रोशर बनाया, उनमें लेआउट्स वगैरह थे. कहीं पर भी पर स्क्वायर फीट क्या रेट है ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट एन अपार्टमेंट एंड ए होलसम कॉस्ट ऑफ इट. Okay. बट हमने उसे ब्रिक एंड मोटर रियल एस्टेट नहीं माना. तो हम ब्रिक एंड मोटर रियल एस्टेट की कहानी भी नहीं बनाते थे. हमारी जो स्टोरी होती थी वो लाइफ एट अंतारा के बारे में होती थी. आप यहाँ आएंगे तो आपका दिन ऐसे शुरू होगा, आपकी एक्टिविटीज़ ये होंगी, आपकी शाम ऐसी होगी, यू नो, एंड सो फोर्थ. बट कंज्यूमर जब हम उनके पास पिच करने जाते थे, जो सेल्स टीम उनसे जब बातें करना शुरू करती थी, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता था, जी पर स्क्वायर फीट क्या रेट है आपका? मार्केट में तो ये रेट चल रहा है, अच्छा. देहरादून में तो ये रेट चल रहा है, हाँ. आपका तो ये, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो वो पर स्क्वायर फीट माइंडसेट से हटाने के लिए यू नीड अ गुड स्टोरी. Yeah. Okay. तो ये जो माइंड शिफ्ट होता है ना, उसके लिए स्टोरी चाहिए होती है. So you are trying to say कि the most important thing, and for you to start thinking about your story, is first think about your purpose. Purpose, absolutely. Then when you have purpose, what's next? The customer profile? Oh yes. So why are you in that business? You are in the business to provide those services to people. Okay. You need to know who those people will be. You can't go random shooting in the dark. For example, at Clove Dental, I spent my So you were the CMO recently, most recently you were with Clove, yes. right? Yeah. Now, we are in the dental business. Anyone who has teeth is your customer. True. Irrespective of age group. Yeah. Infants को तो हम advertise भी नहीं करेंगे, है ना, उनके parents को ही करेंगे. So every adult or even non-adults, children, for oral hygiene and all, are your customers. But random And what's the purpose? Customer ठीक है. What's the purpose of Clove? So the purpose is to help India have better oral health and hygiene. See, हर चीज़ स्टोरी के साथ लिंक होती है. Okay. आप एक फैंसी पर्पस, आप एक अच्छी बड़ी एजेंसी हायर करें, वो आपको एक बहुत वेल आर्टिकुलेटेड पर्पस लिख के दे दे, जो अपनी वेबसाइट पे डाल दें, अपने ऑफिस में 1000 जगह लिख दें. मतलब वॉशरूम तक कोई जा रहा है तो पहले पर्पस पढ़ रहा है. इससे पर्पस डिफाइन नहीं होता, है ना. पर्पस डिफाइन होता है, कोई उसे पढ़े और उसे लगे ओ माय गॉड, या Yeah. राइट, बिलीव करने से होता है. The story of how Clove started, how the founder who was not living in India, he was a Indian living abroad, came back home to India to celebrate some holiday time, took a parent to a dentist and realized that dental care in India is like unbelievably poor. It's broken. That was the purpose. True. कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी. कुछ भी कर ले, ट्रूएस्ट डीपेस्ट इंटेंट यही है कि अच्छी डेंटल केयर दें. ऐसी डेंटल केयर दें सब लोग अफोर्ड कर पाएँ, नेबरहुड क्लिनिक बन जाएं, है ना. जब मैं क्लोव में आई थी तो आई थिंक 300 कुछ क्लिनिक थे, और बाय द टाइम मैं गई हूँ तो 520 से ज़्यादा क्लिनिक बन चुके हैं. सब कंपनी ओन्ड है, सब कंपनी ऑपरेटेड है. कौन डालता है? खुद फ्रेंचाइज करते हैं लोग, है ना. व्हाई वुड यू वांट टू इन्वेस्ट सो मच? बिकॉज यू आर ट्रू टू योर पर्पस. आपका पर्पस है हम उनको अच्छी जेन्युइन केयर दें, वैसी जिसे हम खुद आइडेंटिफाई करें, हम खुद ट्रेन करें, हम उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें. और हर नेबरहुड में, क्योंकि दांत का दर्द तो पूछ के नहीं होता है. True.
One day, a new person, every day new people wake up to a need for dentistry, right? Because someone can have a toothache or a tooth problem any day. So that day when they have a pain, you are available in the neighborhood. True. तो वो कहानी बिलीवेबल लगनी चाहिए. बिलीवेबल तभी लगेगी जब वो कहानी सच्ची होगी. True. सिर्फ कहानी बनाने से कहानी नहीं बनती. The real story is a believable, honest, true story. Yes, you can tweak it, you can garnish it, But it has to have a root. but it has to have a root somewhere. So, for example, you've also led growth for Whistle. Yes. It's a D2C brand, Yes. teeth aligners. And I think that story is also remarkable, what you've done, how you've established that very emotionally. So, I'm talking from a D2C founder's perspective. मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ. जैसे मैं देखता हूँ अभी FedEx है, its purpose is reliability. Apple is innovation. Volvo is safety. If I talk about Rolex, that's sophistication. अब मैं सोचता हूँ कि मैं भी ब्रांड बना रहा हूँ and I'm into shoe. That brand is into shoe. तो मैं एक पर्पस ऐसे ही ले लेता हूँ कि it has to be about comfortable or comfort or something. And then I start weaving a story around it. Maybe I had a problem running and I was a marathon runner. But इसके बाद how do I make complex stories into simple stories for all the customers that I'm targeting? Matlab, for example, if I am only making a product for runners, then there has to be a separate story for it. Or if I am also thinking कि कोई normal casual walking shoe खरीद ले, उसके लिए एक अलग story होनी चाहिए. Story क्या सोच होता है, कैसे बनाते हैं? देखिए, अगर हम ब्रांड स्टोरीज की बात करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि स्टोरी जितनी स्पेसिफिक हो उतनी इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेबिलिटी होती है. लोग रेजोनेट करते हैं उस स्टोरी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहूँ कि जस्ट डू इट, नाइकी सेज जस्ट डू इट, this is not a shoe for runners only. True. That story is about a much deep rooted connection of an emotion to an expression. राइट. और आपने विसल की बात की, तो मैं एक सेकंड के लिए विसल के एग्जाम्पल को लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री meaning products that enhance your smile. Slightly more cosmetic in nature, क्योंकि ये लगाने से आपकी टेढ़ी मेढ़ी स्माइल ठीक हो जाएगी. अब एक लाइन ऑफ थॉट ये कहता है कि देखिए, स्माइल होती है, ठीक है, इसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता. हर एक जने की एक ऑथेंटिक स्माइल होती है, बट आपकी उस स्माइल को थोड़ा परफेक्ट, थोड़ा क्यूरेट किया जा सकता है ना. हम लोग इस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब यूं कहना कि आप हमारे प्रोडक्ट्स ले लीजिए, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपके मिसिंग टीथ हैं, आपके दांत में गैप है, तो आप हमारे प्रोडक्ट के साथ ठीक कर सकते हैं. कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि उसकी स्माइल ख़राब है. True. सब ये कहते हैं मेरी स्माइल परफेक्ट है. कितने टेढ़े मेढ़े दांत हो, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ये बोला है कि तेरे से ज़्यादा अच्छी स्माइल दुनिया में किसी की नहीं है ना. तो ये तो ट्रूथ है. क्योंकि कोई अपनी इम्परफेक्शंस को एक्नॉलेज नहीं करता. तो आप अब जो स्टोरी बनाएंगे, ये स्टोरी दांतों के बारे में नहीं हो सकती. ये स्टोरी को उस डीप रूटेड कनेक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा जहां पर हर लड़की मिस इंडिया बनना चाहती है. True. है ना. हर लड़की अपने कॉलेज में वो क्या बोलते हैं, कॉलेज की मिस ग्लैमरस और व्हाटएवर, राइट. सो every man wants to be a successful man. So is there a lesson here that the story has to be about inspiration and not about repairing the damage or correction? Operational, functional connection cannot last you very long. Okay. You can tell it once or twice. You can tell it at the second go. Okay. It shouldn't be your opening pitch. It should be your closing pitch, Okay. if I may. You know, Yeah. You see, if you look at very simple IDA, you know, attention. Attention grabber has to have something different.
Either it is like totally earth shattering, meaning you slap someone on the face and say, idiot, your smile is so bad, you need to do something about it. But that's not the way to appeal, right? While people may still buy dental products to correct their smiles for different reasons, but to catch attention, you need something which can have a larger appeal. That larger appeal could be about inner confidence. And that is why when we started putting together the brand positioning, we said whistle is an expression. See, when do you whistle? आपने किसी लड़की को छेड़ना है तो आप सीटी मारेंगे, है तो बड़ा डीप रूटेड इनर एक्सप्रेशन. बट नॉर्मली आप ज़्यादा लोग तब विसल करते हैं जब बड़े खुश होते हैं अंदर से. करेक्ट है ना? आप अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर बना रहे हैं, सीटी बजाते बजाते आप खाना बना रहे होते हैं, यू गो इनटू योर शावर, यू आर विस्लिंग योर फेवरेट सॉन्ग, यू विसल व्हेन यू आर inner happiness, right? So that is why the name whistle. Whistle stands for real, true expression of inner happiness. Okay. अब इनर हैप्पीनेस को लेकर के मैं किसी एज, किसी सेक्स, किसी जेंडर के पास जा सकती हूँ. आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप होम मेकर हो सकते हैं. Now I have a value proposition that I can go with. Now I can create stories. True. You could be a wrestler wanting to, wrestle. Your strength is your core sort of need, desire, not your smile. But your smile can help you be more confident when you are in your winning moment. Okay. So you see where I'm going with this. Yes. So, the story that you've shared with Whistle, I think that is a remarkable one because it caters to everybody. Yes. And then that's the purpose, and then you weave stories for different ICPs. Correct. Right? Yeah. For example, I was talking to somebody who's a founder of a watch brand, and he says we sell to two kinds of people. One is for our rich clients, and one is for students who do not have that heavy pockets. Sure. So for the ones that they sell to the richer segment, they have a story that says, the tagline says, partner to your journey in success. And the one that they sell to students, they have a story around collection of that, how do we all of us together rise and become successful. So is there a science behind that as well when somebody is doing something in niche? Because on the outside of it, creating a story that appeals to everybody looks very fascinating, and everybody might not have that kind of story like you had for Whistle, and even the name of it is a story, right? So, and when you've spoken on it, it looks so beautiful from the inside, right? So, but not every brand can be Whistle or Apple or Volvo or Nike for that matter. So how do they do this? देखिए, अब मैंने इतने 5 मिनट में अगर विसल की कहानी बताई तो बड़ी आसान लगती है. हमको 10-15 महीने लगे, है ना, यहाँ तक पहुँचने में कि हम 5 मिनट में ये कहानी बता सकें. तो हार्डवर्क बहुत जाता है. फेलियर, reinvent and yet another time reinvent भी होता है. When you say reinvent, you mean rebrand? No. Unscramble the whole story and write a new story. Okay. ये भी एक प्रोसेस है. तो प्रोसेस लंबा है. जब आप कोई ब्रांड की स्टोरी कहते हैं तो उसको कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. तो अगर हम नीश की बात करें, नीश में प्रोडक्ट टीम आ जाती है बीच में, है ना. वो कहती है अच्छा आपने तो ये बना दी, ये इनर कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट. मेरा जो 18-year-old या जो टीनेजर्स के लिए जो मेरे विसल अलाइनर्स हैं, क्या इनर कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस, इनर हैप्पीनेस कुछ समझ में नहीं आता. उनको इतना समझ में आता है हमको बुली किया जाता है टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए. हमको सिर्फ इसका सोल्यूशन चाहिए, है ना. तो एक लार्जर मीनिंग है for which you stand for. That is your brand standing, your brand promise. You can write campaigns for niche. You can write different campaign for different set of people. You can make it tactical, you can make it seasonal, you can make it regional.
That's where your creative team comes into play. True. तो इसकी साइंस ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट एक है कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट ऑफरिंग ही नीश है. हम जूते सिर्फ एथलीट्स के लिए बनाते हैं, बस. हम और किसी के लिए बनाते ही नहीं है. तो अब आपकी कहानी सिर्फ एथलीट से बात करेगी. अब एथलीट्स आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं. दे कुड बी handicapped as well. There could be many different categories in your consumer segment as well. Now you write your stories for each one of them. True. And you don't have to appeal to all. Correct. You have to appeal to that one person. Okay. Now that story has to resonate. If it resonates to a Shreya will tell everybody in her circle. That is how brand-led growth happens. Brand-led growth is not about performance marketing or ad campaigns, no. Performance growth, brand-led growth is about making your brand such that it goes towards growth. Okay. People take it. People is your audiences. They take your brand forward. They talk to other people. And they come to you. You don't go to them. Okay. Very well explained. Now, we've done everything right. Yeah. But failure still happens. Yes. So, what are the top 4-5 things that you see that are the top limitations of somebody from becoming a great marketer or some product being very successful? I think the first failure of a marketer is the resistance to accept failure. Okay. And I've been there. I've argued with my sales teams where sales team would say, oh, this campaign bombed. It didn't. It failed. And I've said, oh, it was a great marketing campaign. We succeeded. We told our story right. We did. So it's a conversation by itself. But still, what was the objective that you set out for? And if you haven't met that objective, then you failed. As simple as that. Okay. And there is no other way around it. तो सबसे पहले तो अपना फेलियर मानना एक मार्केटर का ड्रॉबैक हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है कि हम आसानी से मानते नहीं हैं. तो अगर हमने मान लिया तो एजिलिटी सबसे बड़ी लिमिटेशन हो जाती है. कई बार वी आर टू क्लोज टू इट. वी बिकम सो अटैच्ड टू आवर आइडिया that we sometimes stop looking. और हम inwards भी हो जाते हैं. और यहाँ प्रोडक्ट वाली बात, आप का लिमिटेशन. We created the best product. हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. इससे बेटर कुछ भी नहीं है. Oh please, someone will catch up और उससे बेटर आएगा. It's just a matter of time. Sure. तो आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा. आपको रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा. और आपको हर बार बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि इसको डिफरेंटली कैसे कर सकते हैं. और मार्केटर की सक्सेस का मेरे मुताबिक, और मैं एक थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ तो शायद ये मेरी पर्सनल जर्नी भी यहाँ पर ऐड करती है, हमेशा प्लान भी होना चाहिए. लाइफ में कुछ भी आप एक प्लान के साथ नहीं कर सकते. You always have to have a plan B or C or D or I think it's a very contradicting statement to make to founders because नहीं, ये इतनी contradictory है नहीं. और प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि अच्छा आपका ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो ये बेचना शुरू कर दो. नो. You don't change your core offering. You change the way you go around it. So plan B is not about have a different business. No. प्लान बी का मतलब ये है एज अ मार्केटर के लिए है. ये फाउंडर के लिए नहीं है. अगर फाउंडर का विजन है कि मुझे इंडिया में पानी का एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी अफोर्ड कर सकता है, इट्स अ ग्रेट विजन, गो विद इट. Plan B could be, or C or D could be about how are you going to make it happen. That's all. So we are talking about options.
you have 24 plus years experience in Yes. growth marketing, and inexperienced growth marketers have a disease. Yes. At least it's said from the outside that they are affected by something called NTS, new toy syndrome. They get distracted to anything new that pops up, Yeah. and they start doing campaigns around that. How has this affected the growth industry as all? I think it's a beautiful syndrome to talk about right now, uh, and the beautiful. Why did I say beautiful syndrome to talk about? It seems like it's a plus. Mm. Okay, Yes. that we are taking opportunity at the moment I of think it's this driven by new. FOMO as Your well. FOMO तो कोई एक्नॉलेज ही नहीं करेगा. कोई मार्केटर से आप बात करिए, हम कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे. मैं भी एक मार्केटर हूँ, मुझे कभी फोमो नहीं होता, बट फोमो होता है. Hmm. Hmm. वी डोंट एक्नॉलेज इट बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि हमको फोमो होता है. वी True. गेट ड्रिवन बाय द, वी थिंक दैट वी आर बीइंग एजाइल and we are going with the tide. Hmm. However, okay, let me give you a very different way to explain this. So there are apps, right? Apps for everything, Hmm. from groceries to plants to I don't know, paintings. We have apps for everything, You know, right? my grandfather loves to say this कि हमारा तुम्हारे जनरेशन में सोने से सोने के लिए पूरा ऐप है. पूरा ऐप है. तो ऐप बेस्ड ब्रांड्स, ऐप आप डिजिटली ही एक्सेस कर सकते हो. Correct. फ़ोन पे, टैब पे, Yes. किसी ना किसी Yes. इंटरनेट बेस्ड Hmm. एक्सेस के साथ जाएंगे आप. तो ऐप मार्केटिंग आप डिजिटली ही करेंगे. True. नेचुरल है ये सोचना, Hmm. लेकिन हम तो ऑफलाइन भी करते हैं ना उनकी प्रमोशन. Hmm. हमको होर्डिंग्स भी लगानी होती हैं, हमको बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं. Hmm. तो इसी तरीके से जो ऑफलाइन ब्रांड्स हैं Hmm. उनको भी डिजिटली अपने आप को प्रमोट करना होता है. सो what I'm trying to say with this is that you have to have a bit of a omnipresence, if I may, Hmm. in today's world Okay. to break the clutter. Okay. Today's world is full of clutter. तो हम क्या करते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं कि ओके 360, there is digital, there is offline, there is BTL, there is ATL, and within platforms, if you start choosing media platforms, there could be like hundreds of them. Where to put more money? Should we spend equal amounts of money everywhere? How do you plan the media mix? Huh? When you create your go-to market, how do you plan the media mix? Now, that is where this syndrome comes and sits on our head, and we don't even realize we are guided by it. हमें नहीं पता चलता. हम कहते हैं ओ आजकल इंस्टाग्राम बूस्ट पे इंस्टा पे पैसे डाल दो, ट्विटर पे, स्पॉटिफाई पे डाल दो सारा पैसा, है ना. तो हम वी आर ड्रिवन बाय अ फिनोमिना दैट अकर्स suddenly, and especially post COVID. Post COVID, I mean, I've been a marketer with brands, और मेरी एजेंसीज थी जो मेरे लिए मीडिया प्लान करती थी, मेरे क्रिएटिव कैंपेन्स प्लान करती थी. कोविड से पहले वाले मीडिया मिक्स अलग होते थे, अब कोविड के बाद वाले मीडिया मिक्स चेंज हो गए हैं. क्या चेंज है? सबसे बड़ा चेंज ये है कि एवरीवन वांट्स टू बी डिजिटल ओनली. Okay. और ब्रांड्स जो जिनके पास ऐप भी नहीं है वो बोलते हैं हम डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है. कैसे डिजिटल फर्स्ट हो गए हैं आप? जस्ट क्योंकि आप सिर्फ डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और आप ऑफलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मेक यू अ डिजिटल फर्स्ट ब्रांड. A digital first brand is which is first available digitally. Correct. And you have an app. Website is not an app. Everybody has a website. True. You know, every single student has a website. Correct. So
Website does not make you a digital platform. If you don't have an app, if you are not a digital first platform to reach out and buy in, just by promoting yourself digitally, so the world has become such that they say we are digital first in our communication strategy. Okay. So this is a new thing that has started to happen. But उसके रहते इतना clutter हो गया है कि performance marketing has not been the greatest success for most brands that are in-person brands. Okay. Brands that are, for example, all healthcare brands also have apps for you to book appointments, etc. But the real experience of taking a healthcare service happens at that In person, yeah. service place, which is the hospital or the clinic, or the consultation office. Yes. That is the place where the real experiences of consumers have started to lose value. All experiences that marketers are concerned about are online experiences. Online experiences are not going to build you a base of satisfactory, loyal consumers, because it is very easy to shift your online preferences. Okay. It So how do doesn't cost you a dime. It costs you just a thumb movement. how do you keep a check on it? You I mean, watch you trends. managed large teams, so Yes. that is why this question is very obvious to you. You must have been seeing very energetic newcomers and growth marketers coming to you with different ideas. Like you said, Spotify में पैसा डाल देते हैं. हाँ, इधर So डाल how do दो, you उधर डाल how दो. as somebody with such a vast experience, how do you be on the pulse of it and you say no, this is wrong, this is right? I think the only way to do this is with a little discipline. For a marketer to never presume. Okay. Sometimes we go with our gut, which is Okay. great, by the way. You should have a gut. Until you start developing a gut feel about things, you are really dependent on, too many other people. Correct. You need to be able to get a gut feel and go with it. Okay. You have to make some mistakes. Not every campaign will be a success. वो भी ज़रूरी है. लेकिन discipline का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को करते ही रहें. इट्स लाइक वो ऑटो पायलट में होनी चाहिए कि आप नहीं भी हो तो वो हो रही हैं, है ना. True. प्लेन क्रैश नहीं हो सकता ऑटो पायलट में. Correct. इट हैज़ टू बी द सेफेस्ट मोड ऑन, राइट. तो उसी तरीके से आपका भी एक ऑटो पायलट मोड होना चाहिए जहाँ पर आप ए बी टेस्टिंग करें हर कैंपेन को. एज अ मार्केटर बिल्डिंग अ ब्रांड, कोई भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल विसल की मैं एक सेकंड के लिए बात करती हूँ. विसल को लॉन्च करने से पहले हमने इंटरनल टेस्टिंग की. वी वेंट टू आवर एंटायर वर्ल्ड दैट वी न्यू, each age group. We created small segments of customers and said, okay, let's do a little testing. Which particular whistle was a winner, but we had 5 propositions to go with. Okay. So that's what I mean by ABCD. Yeah. राइट. सो वो थोड़ा सा प्रेपरेशन करनी, और उसके लिए आपकी तैयारी जीत की जिसे कहते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फेलियर को आप इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं कि ये फेल हो सकती है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा. दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्लान बी. तो आप एक या दो कोर आइडियाज को लेकर के मार्केट में टेस्ट करें. ए बी टेस्ट के बेसिस आपके पास डेटा हो, देन यू पुट योर मनी ऑन इट, देन यू पुट योर बेट्स. बट इवन देन यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. यू वॉच इट एवरी डे. You see where the trend is going. Okay. And you be ready to change. Okay. You may have seen success in your previous campaign on a platform, but it doesn't mean next campaign will. The world is changing. People's preferences are changing. Color बदल जाते हैं, ठीक है. है ना. लोगों की preferences बदल जाती हैं. तो आपको उसके हिसाब से बदलने के लिए ready रहना चाहिए. Okay, so we were talking about limitations. Number one, you've mentioned initially that people, if they lack a purpose, that's a problem. Yes. The second is when we talk about the syndrome, so that is lack of focus. The third is what I call, and you would love to have your thoughts on it, is negligence of the core product and not enough core innovation. So
how do you keep a track on that? See, one tends to become very close to what one has created passionately Hmm. and think that it is the best version of what I could offer. Hmm. But you have to reinventing yourself, keep an eye on the competition. Hmm. You have to have a pulse of what the consumer is shifting towards, and what are they asking for. Hmm. For example, when you listen to your call center conversation, as a marketer, you must be, normally marketing people are behind the scenes people, है ना. हम Hmm. तो सेल्स नहीं है, हम कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्शन तो करते नहीं है, तो हमको इनसाइट कहाँ से पता चलेगी, कैसे पता चलेगा कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा है, Hmm. कंज्यूमर के ऑब्जेक्शंस क्या हैं. Hmm. तो हमको ऑलवेज ऑल द टाइम रिसर्च मोड में रहना चाहिए. Okay. we could we should ideally Hmm. never be in a position to say I know मेरे कस्टमर को क्या चाहिए. इसका मतलब अब आप रुक गए हैं, क्योंकि कस्टमर तो ऑलवेज फॉर एवर इवॉल्व करता है अपनी नीड्स को. तो आप कभी भी ऐसी स्टेज में नहीं हो सकते कि आपको पता है. True. यू आर ऑलवेज डिस्कवरिंग. तो वो करते रहेंगे तभी आप रेलेवेंट रह पाएंगे. अदरवाइज यू विल बी रेलेवेंट वेरी सून. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मार्केटर्स के लिए और ब्रांड को एक्टिव और रेलेवेंट रखने के लिए. आपके ब्रांड को भी, लेकिन आपकी कोर प्रोपोजिशन बदलती नहीं है. यू कैन नॉट, अगर आज क्लोव डेंटल बिजनेसेस में है तो वो डेंटल बिजनेसेस ही कर रहा है. हाँ, उसमें आप इनोवेट कर सकते हैं, गिफ्ट रैप कर सकते हैं, पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, बट वो आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा. I think even Red Bull is a classic example of core innovation. And if you've heard of that WD-40, their message, I think, is fixing everything. And the bottle is yellow with a blue cap, and there's a straw, there's a pipe, red pipe attached to it. And that was the initial product. And in the name of innovation, they made that pipe very flexible. And on the bottle, they wrote fixing everything, even where you cannot reach. And that was like a pipe that could bend and get into the holes and everywhere. So I think, and then that helped increase their sales a lot. So even with Whistle, what you've mentioned is right. So core innovation does matter a lot. Oh, it does. And but again, if the first product, for example, under Whistle, the dentistry smile enhancements product category, aligners was the first product. Okay. Now, aligners are aligners. They're invisible trays that you put in. I mean, they are braces, but they're invisible, right? Yes. And now, core product तो वही है. अब आप इसमें क्या इनोवेशन करेंगे? हाँ, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी टाइमलाइंस को, एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अप द एंटे. बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मटेरियल्स, पॉलीमर ग्रेड जो मटेरियल्स है आप उसको बेटर करते जाएंगे. पैकेजिंग के ऊपर हम बात करते हैं. ब्रांड जो है, ब्रांड कहता है अच्छा चलो मैं पैकेजिंग में कुछ इनोवेशंस लाता हूँ. फेस्टिव आ रहा है, अच्छा चलो एक फेस्टिव पैक बना देते हैं. है ना. हॉलीडे सीजन के लिए एक अलग एजुकेशन सीरीज लॉन्च कर देते हैं. हाउ टू टेक केयर ऑफ योर अलाइनर्स बिकॉज दिस हॉलीडे सीजन यू आर गोइंग टू ईट लॉट्स ऑफ दिस दैट. सो कुछ ना कुछ, वेदर इट इज एट द product manufacturing, product benefit and quality, product packaging, product pricing, something or the other should keep happening. Okay. Otherwise, it becomes too stale. And trust you me, there is no business that does not have competition. And your competition will catch up. Yes. And when you go onto that retail shelf as a product, then standing out is a key differentiator that really directly impacts sales. And like earlier I was saying कि post COVID सब कुछ digital हो गया. Digital world right now is
cluttered like how. Hmm. अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अटेंशन स्पैन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स का, अगर आपने फर्स्ट 5 to 8 seconds के बीच में अपना ब्रांड नहीं दिखाया तो कस्टमर की रिकॉल नहीं होगी. अच्छा. क्योंकि 5 to 8 seconds के आगे कोई एड्स को नहीं देखता, स्किप कर देते हैं. True. Until it's super exciting. Yeah. And it really has I've seen a couple of them, yeah, that hooked me. है ना. तो अब ऐसे एनवायरनमेंट में 5 सेकंड में आपको ब्रांड रिकॉल बिल्ड करना है. कितना क्लटर है. True. अकेले उससे नहीं हो पाएगा. So only that platform will not do. The biggest mistake that I mentor a few startups, because I'm passionate about it, and it's nice to give advice to people and share with them my mistakes. Okay. Yeah. So they can learn. And I tell them, they say नहीं डिजिटल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अभी इतना बजट नहीं है, डिजिटल करेंगे. And I sometimes feel that there is too much dependency on the ROIs, cost versus benefit analysis. जब हम करते हैं कि ओ ये सस्ता है, ये कर लेते हैं, यहाँ बर्न कर लेते हैं, कंट्रोल में भी है, you can pull the plug, है ना. So I don't think that is a wise thing to do when it comes to a marketer. All businesses, until you are in it only for short-term gains. Okay. But who sets a whole business for short-term? All businesses at least aspire to be in it for the long term. True. For the long run. For that, you have to build your brand right. One platform only will not do it. Correct. You have to have at least 2 or 3 platforms, and you have to do it consistently. Do not change it. Okay. Do it consistently. I'll give you an example. There was a friend of mine who started a home collection of laundry, basically. Okay. You know, like the धोबी who comes, वो गठरी में ले जाते हैं कपड़े गिन के और आयन करके दे जाते हैं. He did it only in a slightly more sophisticated way, only for that particular kilometer stretch. कि मैं इस 5 kilometers की audience को cater करूँगा. And he started that people would come, pick it up in a nice basket. The style of doing it was different for which, for a better presentation, he could charge a premium. Okay. But that was not the only reason for his success to then become a big brand later in in less than a decade to reach where he reached. The reason for his success was that he was consistent. Every Sunday there was a cute little personalized message written for that community under the door every Sunday. Now people expected it. Okay. Interesting. Now they are looking forward to it. So they got habituated of that experience. You have to make it a discipline. Okay. Even for your consumer to consume your content. True. So the 5 things that you've mentioned that limits a marketer or a product to be very successful or utilizing their full potential. Number 1, you said, is a lack of clear purpose. Yeah. Number 2, you said lack of focus. Then negligence of core. And then inconsistency in marketing communication. And I think bigger than this is knowing the consumer. Okay. Who your real consumer is. Your customer profiling has to be really strong. Okay. Even before you start putting out any monies, you have to have a very clear identification of the persona of your consumer. How do I do it? I think we need to listen to their habits. We need to listen to what they do.
I mean, today's world, they say when you and I are having a conversation, and if the phones are around and they are listening, and if I keep talking about dental, the next I'll thing have is that I'll ads. start Yeah. getting ads, right? So it's listening. We have to listen. True. Okay. We really have to become AI. Okay. So, last 5 minutes, and I'll not be asking questions. You'll have to assume that you're right now teaching a marketer or a founder, or let's segregate it. Okay. So, first 2.5 minutes, you'd be teaching a marketer, and the second last of it, you'd be having a message for a founder. Okay. So, you've got about 25 years of experience driving growth, healthcare, consumer brands, digital technology, most recently as the CMO of Clove Dental. Um, the next 5 minutes, you will have to be giving one core message to a marketer who's struggling with growth today. Bang on. So, if you are struggling with growth, according to me, the one big reason is that you've gotten stuck to an idea. Okay. Unbox it, which could mean either you are restricting the kinds of products and services that you are offering to thinking that okay, this is all I can offer. Perhaps there is more. You may have restricted yourself to the geographies that you are selling in. There could be other geographies. You may have restricted yourself to the way of expanding your business. There could be other ways. So, hence, literally unbox Okay. all of this Okay. and do not presume. Okay. The big I think way to help do this is go out there and ask questions. There's nothing wrong with asking your consumers, have I been able to satisfy you? Okay. Did I meet your expectation? हम लोग appraisals करते हैं ना, meets expectation, exceeds expectations, below expectations. So why not take feedback from your customer? Did you meet their expectation? What were they looking for? And then be honest and say, I'm sorry, I couldn't meet your expectation. Okay. But what can I do differently? They'll tell you what to do. कोई इनोवेशन के लिए आपको लंबा चौड़ा एक्टिविटी करने का जरूरत नहीं है. Listen to your consumers, they'll tell you. Okay. But yes, you have to be smart enough to then come back and say what bandwidth you have to do. And do it slowly. You don't have to innovate 100% all over. No. Little small changes go a long way, and do one change at a time. Don't change too many things. You wouldn't know what is helping and what is not helping. Okay. So, only one variable at a time. Okay. So, that's how you go in a steady way. But you have to be steady. Okay. So the next 2 minutes will be for founders listening to you. Right. And I'd want to add my thought process here. You know, when I started Competitors View initially, I thought branding is not for me. And being a bootstrapped, self-funded organization, that was never in my thought. I'm being very honest, right? I thought, utna to budget hi nahi hai. So with this thought, and plus with your core message, what would you like to tell to those founders who are not looking at brand-led growth today, but are looking at growth? So, okay. In my view, okay, coming from where I come from, when growth is happening, brand is automatically building. Whether it is building in the way you would have ideally liked it or not can be discussed. Okay. Right? But brand is happening. What is brand? Brand is how people perceive you. What is their connection to your organization, your offering, your products, your services? वो brand है. There can be 100 definitions, but in the simplest of the way, it is this emotional bond and connection, perception that people have. तो अगर growth हो रही है तो brand तो हो ही रहा है naturally. अब आप choice रखते हैं, आप इस narrative को control कर ले
आप कह सकते हैं कि मैं बूटस्ट्रैप्ड हूँ, मेरे पास ब्रांड पे खर्चने के लिए पैसे नहीं है, बट आप जो भी कर रहे हैं बिना ये कहे कि ओके दिस बजट इज स्पेशली फॉर ब्रांड बिल्डिंग, ओके डोंट कॉल इट दैट. Okay. Find a new terminology. Don't have to get stuck with terminology. But you are building a brand. When you go to someone to say buy me, buy my service, you think it's a sales pitch? While that's a sales pitch, but you are marketing yourself. Okay. This sales and marketing is very intertwined with each other. Naturally, both is happening at the same time. So you might as well control the narrative, na? Okay. It's like that. Naturally, कुछ narrative बन जाएगा. Okay, you may be gifted to be very authentic and very good at telling your story. क्योंकि कहानी तो आप बनाएंगे. जब आप बेचने जाएंगे, कुछ तो बोलेंगे. Correct. Whatever that story is, if you've crafted it, that is branding. Cool. Okay. Last thing, and we wrap up. 3 myths about brand-led growth that founders have. That founders have. Yes. They have the opportunity to build a narrative in a way that they will be able to foster trust, a sense of belonging, if I may. People want to belong somewhere. You Okay. know, when you wear a chimichurri or you carry a Prada, you want to show it off. You are now a part of that gang. Okay. Okay, I named brands or a Louis Vuitton or I'm a bit of a roadie, biker, Harley, like enthusiast, everybody, है ना? Harley, everybody's So, a rebel. so जो hogs होते हैं, they call themselves hog. True. Oh, I'm a hog. I'm a hog. Wait, what does that mean? Harley Owners Group. So there is a pride, Correct. a sense of pride. हर फाउंडर के पास ये अपॉर्चुनिटी है. सिर्फ इसे यूज करना है कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बननी चाहिए उन लोगों में जो आपका ब्रांड कंज्यूम कर रहे हैं. But what do they believe instead? I think instead some of them are not driven by a sense of community and fondness. I think some of them are only driven by a sense of business. Okay. And there's nothing wrong with it, by the way. I wouldn't imagine ever running a business where I don't earn profits. True. I mean, then you could do a different line of work which is more philanthropic, which is more charitable, etc. And you do. Everyone, all founders also do a lot of that. But they are founders, if they are founders for a purpose. वो पर्पस की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका बिजनेस के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से दिखना चाहिए. Okay. And there are some founders that I see their stories so authentic, you know. I really do follow them. I don't know some of them personally, have never met them, have only seen their stories online. I think हर founder के पास अपनी कहानी सच्चाई से बताने का ऑप्शन है. और आज की दुनिया और कोविड के बाद बहुत कुछ बदल गया है. लोगों को एक वो जो होता है ना कि आज अपनी ज़िंदगी जी लो कल हो ना हो, वो वाला जो एक सिंड्रोम है, इट हैज़ सेट इन टू पीपल एंड दे वांट टू बी एबल टू लिव एवरी मोमेंट इन इट्स मोस्ट ऑनेस्ट वे. ऐसे दौर में आपकी ऑथेंटिक कहानी अगर आप किसी को बताते हैं तो आपकी कम्युनिटी ऑलरेडी बन जाएगी जो लोग उस कहानी में बिलीव करते हैं. True. है ना? हम लोग बैठ जाते हैं एक पुरानी मूवी लेकर के. जितने मेरे एरा के, अब ऐसे चैनल पे अपनी उम्र तो नहीं बता सकते लेकिन जितने मेरे साथ के लोग हैं, एंड मे बी आई विल गिव आउट क्लूज देयर, और हमारी बचपन की फेवरेट मूवी है शोले. तो कभी ऐसे जैसे किसी सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, अगर एक ने एक डायलॉग बोल दिया तो दूसरा जना उसका नेक्स्ट डायलॉग कंप्लीट करता है क्योंकि वो एक आइकॉनिक स्टोरी, ये एक बिलोंगिंग है. Correct. उस एरा की मूवीज का फॉर एग्जाम्पल. ऐसे अगर आपका दैट इज द
That is the essence of brand building. Okay. Number 2. दूसरा आई थिंक ये सब फाउंडर्स को एटलीस्ट इट्स माई मैसेज, आई डोंट नो इफ दे हैव इट और नॉट, बट आई थिंक commitment is a big thing. Okay. Now, commitment can be viewed in different ways. एक commitment होती है कि आपकी पर्पस के लिए commitment, कि मेरे को ये करना है, ये मैंने एक विजन बनाया है और मैं इसके लिए कमिटेड हूँ, इसलिए मैंने ये बिजनेस, ये कंपनी को फाउंड किया है. Okay. दूसरा है आपकी कमिटमेंट टू स्टे ट्रू टू इट. हाँ, Okay. कुछ भी हो जाए आप अपने उस पर्पस से मत हटिए. Okay. हाँ, आप प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, आप ऑडियंस चेंज कर सकते हैं कि ओके अब मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं करूँगा बिजनेस, मैं साउथ इंडिया में करूँगा. पर आप अपना पर्पस मत छोड़िए, एटलीस्ट नॉट अंटिल there is no other choice left for you. Don't give up Okay. too soon. And the other thing, and this is coming from personal good and bad both experiences. Okay. So I do have a bit of a bias here. I think जब सक्सेस आने लग जाती है तो एक तो था कि लड़ते रहो पर छोड़ो मत, stay on your post. But when you start seeing success and you pass on the baton to a bunch of professionals, and it is the right way to go. You can't keep doing everything. On your You have own. to delegate, right? You have to hire experts and people who are professionals in the job. You have to have the ability to pull the plug on them when you think it is going in a direction that is not true to that purpose for which, for the core purpose for which you started the business. कभी कभी जब सक्सेस आने लग जाती है तो हम लोग डिविएट हो जाते हैं अपने कोर पर्पस से. Okay. वी गेट टू ड्रिवन बाय पीपल हु जॉइन अस एंड ये उनका भी पर्पस बन जाता है. डोंट गेट मी रॉन्ग, एक सपना एक फाउंडर ने देखा, आज उस सपने को पूरा कोई और कर रहा है तो ये उसका भी ड्रीम बन गया है ना. True. लेकिन उसका स्टाइल और स्ट्रैटेजी जो है अगर आपके कोर पर्पस से डिविएट हो रहा है तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन्हें वापस खींच के लाएं. True, and this happens in large organization as well. I think last year there was a press conference done by one of the largest investor of Unilever, Terry Smith. He said that, and it's about Unilever, and he said that I think Unilever has got too solid on the sustainability agenda and has lost focus on its core. And that was a huge statement coming from a big investor, and nobody in the growth or marketing team was ready to accept it. But it was true, right? They were trying to get into that umbrella of sustainability too much, and forgetting the core. So you're right, they do get distracted. वो होता है. और जब ग्रोथ और एक्सपेंशन के मोड पे आप आते हैं, जैसे अगर जब हमने मेरिके इंडिया में लॉन्च किया था, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वेरी क्विकली, आई नो आई मे हैव lost the time window, but I'll Yeah. just share in case you want to. Sure. It was an American company, founded in America. Americans have a different mindset. Had success in China, so they said हम इस फॉर्मेट को, अब इंडिया और चाइना को लोग बड़े कॉमन लेंस से देखते हैं जब ग्रोथ की बात आती है ना, बिकॉज फॉर द शेयर साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन कि भैया वो भी इतने सारे लोग हैं, ये भी इतने सारे लोग हैं, वहाँ चल गया तो यहाँ भी चली जाएगा ये फॉर्मेट. ये सोच के हम इंडिया में लॉन्च कर दिए. अब जब हम इंडिया में बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, हर कुछ 100 किलोमीटर्स में हमारी भाषा अलग है, हमारे रंग अलग हैं, हमारे खाने का टेस्ट अलग है, हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. तो हमें उसके मुताबिक हर कुछ 100 किलोमीटर के बाद अपने ब्रांड को बदलना है. Correct. थोड़ा सा उसे, मैं ये, हम लोग उस वक्त हंसते थे, हमने टर्म बनाई थी ग्लोकलाइज करना पड़ेगा, कि ग्लोबल ब्रांड को लोकलाइज कर रहे हैं हम. पर वो करना ज़रूरी है. कभी कभी क्या होता है कि हम वो करने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमें सक्सेस दिख रही होती है कि ओ माय गॉड यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, यस यस डू दिस. वी गेट इन्वेस्टेड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं, वी गेट कैरिड अवे बाय दैट, एंड
like that, when Mary Kay was growing, the global brand, it allowed everything that we wanted to do at global, at local levels. But many years ago, when Mary Kay had gone public, they were like huge success, and anyone True. can Google Mary Kay, but they bought all their shares back. Wow. Now, why am I sharing that story? The woman Mary Kay Ash was 70 plus year woman, dining table पे बैठे बैठे कुछ skin care products बना लिए. She was a grandmother, and many years later, his grandson went public, and now they were bound to do things for growth and success that the shareholders were expecting, which were not really true to the core value Yes. system, the core principles on which Mary Kay was founded, and they bought everything back and they became privately held. The reason why I share this story is for founders to keep an eye of what they founded, why they founded, Why they for started. who they founded. Okay. वो हम कई बारी हु तो हमारी आंखों से बहुत दूर चला जाता है Especially after success. आफ्टर सक्सेस. True. तो वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. You've shared great stories, Thank you. great lessons. I think we can break this into if we keep a draft of it, 15-minute crash course on brand-led growth, which is fabulous. Thank you so much for being on the Mastermind Podcast. My And I pleasure. look forward to having you again here sometime. And the topic that I'd want to discuss with you is people focus a lot on digital platform-led internet businesses, growth marketing. And the notion that I'd want to talk will be on growth marketing in the services business, which is still less talked about. So thank you so much. And It was a pleasure. yes. I really enjoyed myself. Thank you for having me. Thank you. Thank you.